Hello, good morning, students. I hope you are fine. I am Dr. Anna Mujib of Psychology Department from Marwadi College. As in the previous video, I have discussed the definition of psychology. Now, today, I am going to start analysis of that definition. Now, I shall conclude analysis of above definition. Definition is psychology as a positive science of experience and behavior interpreted in terms of experience. On analysis of above definitions, we find the following points. A. पॉजिटिव साइंस. हम किस तरह कह सकते हैं कि साइकोलॉजी पॉजिटिव साइंस है. Psychology is a positive science which studies experience and behavior serially, controlled and unbiased manner. Psychology studies our mental activities, our learning process, factors influencing it, etc. We are related with what, how and why. साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? व्हाट, हाउ एंड वाई. क्या है, कैसे है और क्यों है. सपोज एग्रेसिव, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेसिव. उसका मीनिंग क्या है, वो क्यों होता है, व्यक्ति से क्यों करता है और कैसे होता है. बी. एक्सपीरियंस, अनुभव. अकॉर्डिंग टू उंट एंड टिचनर, only experience is the subject matter of psychology. All living beings are influenced by the sensations and the impacts of circumstances in the living beings are called experiences. In the living beings are called experiences. Psychoanalysts have categorized experience as conscious experience, subconscious experience and unconscious experience. The experience which we have immediate knowledge is called conscious experience. Immediate knowledge, जैसे कि ऊंट ने कहा था. The experience about which we do not have immediate knowledge but we can know if we try is called subconscious experience. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 3 तरह का कॉन्शियस होता है. एक है कॉन्शियस एक्सपीरियंस, सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस. कॉन्शियस क्या हुआ, जिसका हमको प्रेजेंट में नॉलेज होता है. सबकॉन्शियस क्या हुआ, जिसका हमें प्रेजेंट में नॉलेज नहीं होता है लेकिन अगर उसे याद दिलाया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए तो वह मुझे याद आ जाएगा. सपोज़ हिंदी में मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और अननॉलेजेबल टाइप से वो अपना पैर हिला रहा है, उसको उसका ध्यान नहीं है, लेकिन जब अगला इंसान कहता है कि आप पैर हिला रहे हैं तब वो उस पर ध्यान दे देता है. उसी तरह से अनकॉन्शियस होता है. अनकॉन्शियस में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, कितना भी आप ध्यान दीजिए आपको याद नहीं आएगा. ड्रीम्स के द्वारा हम लोग या मेंटल रोगी जो होता है वो इस चीज़ को करता है और इसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है. तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सपीरियंस को ऊंट और टिचनर ने 3 हिस्सों में बांटा. कॉन्शियस experience, subconscious experience and unconscious experience. Okay, and then the experience about which we do not know immediately and even if we try to know about it, we cannot know about it is called unconscious experience. Okay, number C, behavior या व्यवहार. Psychology studies the behavior of an individual. Any physical reaction towards a stimuli is known as behavior. Behaviors are of 2 types, internal behavior and external behavior.
And now, what is internal behavior? Internal behaviors are such behaviors which cannot be seen by our naked eyes, but which are felt, and with the help of instruments we can know about such behavior. For example, pulse rate, heartbeat, blood pressure, digestive function, etc. And external behavior are such behaviors which can be observed with our naked eyes also, for example, jumping, running, eating, etc. Thus, organism in psychology we study not only about the human beings but also about the animals and birds. ऑर्गेनिज्म यहाँ हिंदी क्या होगा, प्राणी, यानी ये साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स का स्टडी नहीं करता बल्कि एनिमल्स, बर्ड सभी पे स्टडी करता है. एंड लास्ट, इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, individual does experience and behavior in the environment, and every behavior of an individual is this effort to adjust with the environment, and this is why psychology is concerned with overall adjustments of the organism with the environment. Thus, it is clear from above discussion that psychology studies experience and behavior of all organisms scientifically in relation to environment. Okay, so you can write definition of psychology. Psychology is the science of human and animal behavior. It includes the application of this science to human problems. Okay, today definition is completed. Thank you.